Good evening, people. Welcome back. Let's start with one more session about market profile and auction strength. Let's quickly start from the same point where we finished last time. And before we start, just let me know quickly if you can hear my voice and see the screen, and then we continue. Well, great. Well, with this confirmation, let's start the class. Today again we're gonna start talking about market profile, auction strength, that how do we see auction strength while there is some sort of trend that is happening, and how we can figure out that the auction strength is weakening. That means there would be no trending movement can be expected if the auction strength is a little weak. So how can we see those early signs, and where we can see some exhaustion or continuation, all those things, that is what auction strength means here. So before we start, let's just quickly go through the disclaimer that derivative markets and equity markets are highly risky assets, and one should always consider a financial advisor to make any buying or selling position. And I'm not a financial registered broker or advisor, and I'm here only to share my information that I have learned so far, and everything that I'm sharing here is just a collection of observation and experience of some of the great traders of their times, and I in no manner have created anything new here. So I'm just playing a part of choosing the right information that suits me, and compile them together to make something useful for myself, and I hope you can do the same thing for yourself. And if you do that, that will be really beautiful. So we spoke about it last time. What was auction strength? How can we use different concepts that we have already spoken about to find out more about the process of figuring out the auction strength? And then we actually reached to the point that what are those you can say technical points to observe when you are when you are taking like sort of like a intraday trade. Basically a short time frame traders can see certain things, and what should be those points. So we spoken about like open, like where does the market open in respect to the previous day, and if market opens say in the range or outside the range, and how are they expected to be behaving depending on the context of the day of the previous days. So I spoke about these things a lot, that context is really important, that what market has been doing previous days, not only some especially in our market, because it's just a 6-hour market. When markets are continuous, let's say there are 24/7 markets, that happens throughout 5 days a week, and sometimes crypto is happening like 24/7. So those markets, still you don't have to have much of the context, but just a very close nearby idea. That means if you're just trading say 1 hour candle or a half an hour candle, you'll be good to just see what was the recent 4-hour candle been doing, and you can just see some of the reference point like support or resistance of a 4-hour candle or a 1-hour candle, and then you can expect with certain behavior that where it's supposed to go the next point, whether it's going to go and test some support, or is it going to go test some resistance, and how will it behave there will decide their later course of action as well. Well, in our market, because it's not continuous market, it just finishes within 6 hours, so we cannot just go only for the hour to hour basis, that I'll just focus on the next 1 hour motion. We have to actually take the context in consideration, that what market has been doing, where has it finished, what has been happening for last 1 week or few days, and then accordingly, after seeing some action for few days, then accordingly you should come to a smaller time frame like 15 minutes or 5 minutes,
or 1 minute or half an hour, whatever is your edge going to be, and then you should see these trade setups forming. So we're talking about, first of all, the intraday, like a short time frame trader who's going to be finishing their position and taking their position and finishing it, squaring it off on a daily basis. What should they be looking at? What are those parameters and information points? So first of all, the first thing that we spoken about in that was the open. That way market opens up when it has already made some sort of progression in terms of trend, or maybe a consolidation in terms of sideways market. So we need to really focus on that. That is the first thing that we have to look for, that where does it open. So we spoke about this point like last class, and then the next point of consideration should be after that is the IBREX, that where is the initial balance range extension is happening. And as I said, we just see that IBREX, where is it happening, does not mean that it would continue the day there and that way. So we've seen the examples as well last class, that if the IBREX, let's say if these are the A characters and the B character starts here, gives a pullback, and starts continuing then down, gives a range extension from A to B, does not guarantee that C, D, E, F, G, H, everything would go in the same way. It may not, depending on the, again, context, what has been happening prior to it. What is on the left side area? Is it a clean area? Is it a gap? Is it a single print? What is it? So we really need to see these things. First, the context, what has been happening. Where has market opened up in in the context of the previous day and previous day's price action, plus when it's trying to reach into certain area, what is the left hand side area structure is like. Are there HVNs available that is trying to give some resistance? Are there some sort of like a low LVNs available? We've spoken about that as well, that where the volume is not attached, and price can go, as I said, price can go and then attach volume to this area. You're not able to see the screen, I think. Wait, let me put it this way. Yeah, now it's visible. So we need to see these things. I was talking about that market may just let's put it this way. Let's keep it little clean to give you, yeah, it's better here. So I was saying that market could have been okay, certain different position. Don't want to show you right now the charts, otherwise we'll get confused. So I'll take the windows off right now. Yeah, so I was talking about this thing, that market might have been giving you initial range extension. This is the initial balance of A and B, must have given a range extension towards the low side. Does not guarantee you the lower action would continue. It would depend on the, first of all, the context from the previous day, कि previous day कहाँ open हुआ है और ये characters कहाँ आ रहे हैं, और previous days का भी context कि क्या ये किसी तरह का trend motion है, क्या है, and other thing is the left side area में क्या structure है. अगर left side area में कोई HVN है, that means there is a high volume node, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मिला या नहीं मिला, वहाँ से वो नीचे जा करके क्या यहाँ पे एक लोअर वॉल्यूम नोड, मतलब LVNs हैं जिस एरिया को, लेट्स से देयर आर 2 HVNs एंड बीच का एरिया थोड़ा एम्प्टी है, तो मार्केट कैन कम एंड स्पेंड द टाइम बिटवीन टू दीज एरियाज and then just fill this area with the volume. By the time it will finish the whole day, there will be volume here as well, and when you're going to combine these 3 days, it's going to be filled with good volume. So these things always keep happening. As I said, market would move from one reference to another reference like a Tarzan, from one branch to another branch, but it has to have some point. So if it's falling, it is always going to fall from one support to another support. If it's rising, then it would always go and tap from one resistance to another resistance. Of course, as I said, there were 5 things that it can do. The first thing is respecting that level. Second is rejecting that level and then continuing like a liquidity sweep. Third thing is absorbing that level. Fourth thing is absorption happened too much and then there is a fall, exhaustion. And the fifth thing is goes through it without even respecting it. That goes
with additional context, not without context. It's not like market would just go through a reference without any previous history of कि पीछे का कोई context नहीं है और market just goes through a level. Happens very rarely, maybe just because of some news or something. Okay, so because we know that, then what do we have to do? We have to now go to the next point. What is the next point? Next point is OTFing and range extension. So we'll keep taking example as well side by side. मैं side by side आपके लिए charts में open कर देता हूँ ताकि हम इन examples को भी consider कर पाएँ. Just give me a second, guys. Let me open the charts for you. Yeah. So I was saying that this is our channel and we were talking about it, that what can be the next point of action and how is it going to be. So this is one thing. I'll just for right now, so that it does not disrupt the view and give you a clean chart, we'll just add candlestick to market profile to it. Yes, and take the candlestick off. Cool. And for a while we'll just hide everything that we don't need. Give me a second. We don't need to see the poor highs, poor lows. It's a chaos on the chart otherwise. So I'll try to keep it like as plain as possible, not to have much things going on. Let me just see single print composition shadow format. You don't want that. Cool. So here we are. Let's just close everything here, and now you can see these charts clearly. Yeah, so I've kept it simple, and the way we start, first of all, as we were talking about, that we need to see and if this is just, let me just make one more setting for you. It will make much more sense then. Perfect. Okay, so we were talking about these things, and we were saying that when market was opening here yesterday, that there are two things that can happen, and that was that if there is this channel, lower channel, and it's a pullback, which is sort of like I said, is not giving that much good follow through, might just start ending up here, and if that happens, you may get a break, and let's see where it happens afterwards. Or if it continues, then it might just go and reach up to the topmost higher resistance, which was somewhere around 24,800. This is Bank Nifty. Let me just open Nifty as well. Bank Nifty and Nifty are almost moving exactly the same way. You'll see the charts gonna look very similar. Most of the time I don't even get to see the levels and the values, and still, yeah, so this is it. So here we are, and we were talking about this particular area, that markets are entering into this sort of action, and it's going a little bit as, because it's an engulfing candle, and still try to go towards the downside. And if I just go and split it for you, then we were talking about this
particular action. That market has spent the time here and has given us a Q shape. Now what can happen that if you open there, you might just give some sort of action to go and tap this Q shape. It did not do that, which is fine, and then started going down. And we spoken about that idea as well, that how the possibility of going towards the lower of this channel, and that possibility was that though it's a pullback which is in the up motion, but it's sort of failing to make higher highs, if you see what I'm trying to say. Yes, sort of feeling like making a good higher highs. That idea shows a little exhaustion, so market might just go here, and if it start just spending some time here, then might just continue its direction to the low side, because we were talking about that this is a pullback only to the down move, right? And if it's a pullback to the down move, then if it's exhausting, there are chances that it would continue in the down move in the later day, and sort of that thing had happened. Now this particular action shows as always, I'm gonna always see the markets the same way, which is that once you got the idea that now I'm going down, how faster or how confident did you go down? You did not go down that faster for me. This is happening today, so I still expect that now market for tomorrow when opens up should go gap down either and take all these people, and if still you come back to this range, then that means all this action of today's was such a waste of energy and time that now you would want to go and test all those bigger HVN who push the price to the bottom here. So you can see these three HVNs where the people must have added their position, which is 1, which is 2 combined with this, and this is the third one. Now prices move in a good format like that, but then this should be, because this is a pullback to the downside, getting exhausted. We've spoken about that as well. And now if it's showing its color to go to the downside, now there should be no delay in that. It should have fallen today only, just at least breaking below these lows, and just taking their inventories as well. That sort of thing did not happen. Because this did not happen, there are some, if you can see these purple lines and you can see these green lines. These green lines and the purple lines are actually the value area high and value area low of that particular day, which are untapped, जो अभी तक untapped है. तो आप इस एरिया में अभी भी untapped है और आपको जल्दी निकल जाना चाहिए था, बट क्योंकि ये नहीं हुआ और एग्जॉशन टाइप्स हुआ, तो इसका रिजॉल्वमेंट एक ही तरीके से हो सकता है कि आप अगले दिन गैप डाउन करें और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिकवर करके आप नीचे की तरफ की जर्नी कंटिन्यू करें. If that does not happen, that is the expected behavior. If that does not happen, you end up starting here, then there are chances that you come here, find some support on this area and start pushing up, taking all the inventory right above these areas, goes up all the way, and try to show another sign of continuation of this channel, not in this way, but then in maybe this way. I don't know if that makes sense, but then the next area of liquidity to reach would be here. That way you won't be able to fill the gap that we have here somewhere around 24,800 हमने बात करी थी. वहाँ पे जाके पहला HVN है, बीच का एरिया पूरा क्लीन है, तो शायद हम उस तरफ ना पहुँच पाए. और अगर हम ना पहुँच पाए, अगर यहीं से आके रेजिस्टेंस लेते हैं, then there should be a good idea to fall. So that was the thing. But you can see now the ideas of trade facilitation में जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि how to match this auction strength. So we are talking about the range extension, and if you see the range extension here on this day, like today, yesterday it happened that there was a range IB range extension to the low side. इसका range extension B ने A से नीचे जा करके दिया, but C continued up, D and E as well. After that market stalled and there was no follow through. There were no higher highs in the making, and market just stalled, and that's when we shorted the market and we got this whole action going into the vein. But now today when the market opened up here, it should have because it first of all opened in the mid of the range, which is the previous day range, that is the open point.
After the open, it should have slowly and gradually reaching to the lower side that it did after a good struggle, after a good consolidation, spent a lot of time, and then reached towards the mid of the day, towards the low side, did not give any pullback even, and started going down. That means the context was very clear that I'm going down. But the whole process of going down is so sluggish right now in the whole process, because there is this HVN here that you're trying to get support from, but you did not give a support idea, but you're just absorbing and coming down again. So the whole this big HVN that has the volume attached to it, you know, this big whole HVN that has volume attached to it, if you could not continue to go down below it, you might just go above it as well. That can be the chances. So that's what we try to see from the context, and this is what we try to see from the opening and range extension. इसमें range extension नहीं हुआ, B becomes the inside bar of A. That means you get to know कि अब बहुत ज़्यादा sluggish move रहने वाला है, क्योंकि आपके first half an hour में जो range बनी, next half an hour की range decisive ही नहीं है traders कि हमें कहाँ जाना है. That means there is no higher time frame to do any sort of outside the range activity. तो जो भी इस रेंज के अंदर की ट्रेडर्स हैं वो बस इसी रेंज के अंदर ही अपने आप ही ट्रेड में पॉजिटिव और नेगेटिव चलते रहे कम से कम एफ पीरियड तक, एंड ओनली ऑन एफ पीरियड दे स्टार्टेड गिविंग आउट सम follow through to the downside. So inventory was in the weak hands or short time frame hands for a good time here, right? That is the idea that we get to see from these consolidations. And when we broke out of these consolidations, the next idea or the next station would be the next support line, which is this HVN that you can see from here, and market reached there given time and started making absorption below it. That means the another like if I just scroll it, you'll get to see the bigger time frame, like the consolidation of all these areas. If I'll just do consolidate them and I say merge to the left, merge to the left, and merge to the left, sorry, if I merge these things to the left, then you get to see the main consolidation was here only, जिसके नीचे market जा चुका है. But then there's this HVN part, which is the distance between these two volume nodes. I'm talking about these areas. That's what I'm talking, that market tends to fill the areas that are empty. ये एक HVN है और ये इसका side HVN है, क्योंकि ये टेल के बाद हमारे बने थे दो बी शेप टाइप्स. अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड एरिया जो है, इनके बीच का जो ये एम्प्टी एरिया है, यहाँ पे मार्केट अब थोड़ा वॉल्यूम अटैच करने के लिए ये टाइम स्पेंड कर रहा है. और अगर वो नेक्स्ट डे ओपन होता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है और उस एक्टिविटी में जितना वॉल्यूम जो अटैच करेगा वो सारा वॉल्यूम यहाँ पे इस एरिया में अटैच होकर के इस एरिया को पूरा फिल कर सकता है, एंड इट विल बिकम अ यूनिफॉर्म एरिया बैक अगेन. आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बिकम और इट वुड बिकम, आई एम जस्ट सेइंग इट कैन, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग टू सी कि मार्केट वन HVN के बाद दूसरे HVN यानी वन सपोर्ट को एक बार टेस्ट करने के बाद सेकंड सपोर्ट की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे कैसे एक्ट करेगा वो देखना है. एंड माय सरप्राइज वाज कि यू डिड नॉट गो टू द सपोर्ट क्विकली इनफ व्हेन देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ बीच में कोई और सपोर्ट नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था जो आपको रोक रहा है. तो दैट इज़ द थिंग जिसको हम कह सकते हैं कि आप शाय अवे करने की कोशिश कर रहे हैं इस एरिया से, तो शायद कल का दिन सिर्फ एक स्पेक देख के ही ऊपर हो सकता है. दैट कैन बी द वन थिंग. Or maybe you just straight away go gap down and continuing my journey down, that sort of thing. So let's come back to our third point, which is the range extension and OTFing. Let me just show you how is it written as well. You'll get to see it here. Yeah, so I'm talking about range extension and OTFing, the third point. So we have spoken about open, we have spoken about initial balance range extension. Now let's talk about OTFing and range extension on MP charts. कि हम OTFing और range extension से कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक होती जा रही है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो टू दिस पॉइंट एंड विल गो टू आवर चार्ट्स बैक अगेन. देयर यू आर. यस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये पहला फर्स्ट जो हमारा हाफ ऑफ द डे है, इसमें बिल्कुल भी अच्छा ट्रेड फैसिलिटेशन नहीं है, जैसा कि हमारा रहा था आप कह सकते हैं प्रीवियस डे में
या फिर जैसे ये डे है कंसोलिडेशन, बट अगर इफ आई स्प्लिट इट तो यू गेट टू सी इनिशियल बैलेंस बनने के बाद भी किसी तरफ रेंज एक्सटेंशन कंटिन्यूस नहीं रहा। अब जब मैं कहता हूँ कि कंटिन्यूस रेंज एक्सटेंशन हो तो वो किस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। लेट मी शो यू हियर कि हमने मार्केट ओपन यहाँ पे हुई, ए सेक्शन पूरा नीचे तक गया, बी ने उसका रेंज एक्सटेंशन देके एक टेस्ट की तरह लिया और सी स्टार्टेड टू रिजेक्ट दैट एरिया टू गो अप। दैट इज़ अ गुड आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें अगर आप ऊपर जाना चाह रहे हैं। बट सी कंटिन्यूड, डी गिवन द रेंज एक्सटेंशन आफ्टर सी एंड ई ऑल्सो कंटिन्यूड विद द रेंज एक्सटेंशन। F did not do that. That is the first sign of exhaustion. We can say कि पहला lower higher low बनाते बनाते मार्केट ने पहली बार एक lower low और lower high बनाया, which is fine. That can still be taken as a pullback, जो हमने last time भी डिस्कस करा था कि हो सकता है कि ये चीज़ सिर्फ एक pullback हो, and then market just break through it. Then market reach to this area, trying to give a pullback, rejects, stalls for some time, spend some time, and J and K try to do something but did not even after a pullback, then the next point of a continuation of a trend should be fast enough. When that does not happen, then we get to know that this auction does not have any strength. The auction of the buying side does not have any strength. It's exhausting and it might just drop down, and that what had happened to this fall. The same concept we can apply here as well. When market open at this area, I hope you can see the charts. Or let me just extend it a little bit more for you because the characters are very small. So let me just show you this day. Now today, I hope now you can see it. So I'm talking about this area now. We had opened up first of all in this range. ये कल का रेंज था, हम इस रेंज के एक डबल इसमें HVN बने हैं और बहुत स्मूथ कर्व नहीं है. If you see, it has anomalies to it. So market always try to tap in these anomalies and fill it with volume to make it smoother. But let's just come to the point that we opened up here, right? And after opening up here, we started trading and made the first range of half an hour. That B period started and B period could not even go make the range extension to the top and did not make the range extension to the bottom. That means a inside candle. That is the first sign that this day can be a indecisive day. Market does not know where to go. Why? First of all, इतना बड़ा एक रेंज है पूरे दिन का, शायद इसी के अंदर अप और डाउन के जो रेफरेंस है उसी के बीच में रह जाए, या फिर हो सकता है कि कोई मूवमेंट आए ना और हम इन्हीं के दोनों के एरिया को बीच के अंदर जो बीच का ये डिप है इस स्विंग का, इसको फिल करने की कोशिश करते रह जाए. बट मार्केट अब हम इसमें ऑप्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि इसने किसी तरह का डायरेक्शनल मूव नहीं दिया. तो सी पीरियड स्टार्ट होता है एंड सी पीरियड ऑल्सो स्टेड इन वन साइड, दो हैज़ ट्राइड टू गो बिलो बी बट एंड बिलो ए एज वेल, बट डिड नॉट गेट थ्रू एंड कंटिन्यू ऑन द डी साइड एज वेल. डी स्टेड एज अ इनसाइड बार. तो आपको दिखाई देगा कि जब एक जगह पे एक्सटेंशन हो रहा है तो दूसरा हाफ एन आवर उसके इनसाइड रह जाता है. जब सी ने कोशिश भी करी एक तरफ रेंज एक्सटेंशन देने की तो डी स्टेड इनसाइड. सो दिस सॉर्ट ऑफ एक्शन shows so much exhaustion in the movement that traders are not sure where to go, and that's why there are so many chances of getting stop loss hunt and people who are thinking कि अच्छा but शायद market नीचे जा रहा है and they try to come into the sell part, then suddenly market goes up small bit only but that is enough to take the stop loss, and when they start thinking कि अच्छा market अब वापस ऊपर जा रहा है then they give a bigger fall to the down. So these abrupt motion happens in a range bound market only, where market can just tap outside little bit or tap in on both the side and still stay inside because they are not sure where to go. So इसलिए लोग कहते हैं कि when there is no trend, try away from the range bound markets, because you might try to think I can always sell in the range and I can always buy from the bottom. Yes you can, but sometimes these small movements and small जो हल्का सा रेंज एक्सटेंशन होता है वो आपका स्टॉप लॉस आउट कर देगा, और अगर आप उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे पता चला उसी टाइम पे वो इस बार स्टॉप लॉस हंट नहीं था, इस बार ब्रेकआउट ऑफ द रेंज था. तो जो वो ब्रेकआउट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और वो फिर आपको हर्ट कर सकता है. सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू स्टे इन द रेंज व्हेन मार्केट इज इनडिसाइसिव. सो लेट इट प्ले इट्स कार्ड एंड ऑलवेज वर्क ऑन दैट पुल बैक जो भी आपको दोबारा से देखने को मिले. सो जब तक ये मार्केट रेंज में रही इसने दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेज लिए और अपना इन्वेंट्री को कलेक्ट करता रहा, और जब फाइनली इसने
दोबारा से रेंज एक्सटेंशन दिया इफ यू कैन सी, देन इट कंटिन्यूड आफ्टर अ पुल बैक to the G, to the H. I has given little bit looked above the previous one and then continued. So because इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो जो वन टाइम फ्रेमिंग है वो यहाँ पे नहीं हो रही थी, बट इस पॉइंट के बाद शुरू हो गई वन टाइम फ्रेमिंग। मतलब कि हर बार वन टाइम फ्रेमिंग यू कैन सी, जैसे हमारा हम इसको बोलते हैं टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी TPOs, तो इसमें TPOs एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वन टाइम फ्रेमिंग हो रही है। दैट मीन्स लोअर लो बनते जा रहे हैं, वन टाइम फ्रेमिंग दैट मीन्स लोअर लो बनते जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अ ट्रेंड। दैट इज़ व्हाट यू कॉल वन टाइम फ्रेमिंग, OTFing। और यू कैन से अगर हम कैंडल्स देख रहे होते हैं यहाँ पे तो हमें दिखता है कि वो लोअर लो बना रही है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हमने पहले बात करी थी कि अगर कोई ट्रेंड अगर है, एक्टिव है, तो सबसे पहले उसकी वन टाइम फ्रेमिंग होना रुकती है, फिर कभी वन टाइम फ्रेमिंग के बाद उसका लो टूटता है। दैट मीन्स जो ये हायर हाई भी बनते जा, यानी हायर हाई के साथ हायर लो बनते हुए जा रहे थे, वो ब्रेक होना पहली बार शुरू नहीं होगा, वो दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप होगा कि हायर हाई बनने बंद हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है हायर हाई बनाते हुए वो सडनली एक लोअर हाई बनाना शुरू करेगी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाते हुए जा रही है, तो सडनली लोअर लो बनना बंद हो जाएंगे अगर ये ट्रेंड स्टॉल करना बंद करे। बट यहाँ पे उसने एक बार पलट करके पीछे भी देखा, दैट इज द साइन ऑफ जस्ट टेकिंग द स्टॉप लॉस वंस एंड देन कंटिन्यू द सेम ट्रेंड टू दिस साइड। बिकॉज कभी कभी लोग ट्रेंड को देख करके जंप करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट उन्हें बाहर भी निकालती है, फिर वापस कंटिन्यू करती चली आती है, एंड देन मार्केट कंटिन्यू टू इट्स टूवर्ड्स द डाउन साइड। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो ये पीछे हमारे लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, ये भी एक लोअर हाई था, बट यहाँ पे एक बार एक हायर हाई बना, तो आपको पता चलता है कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा है, क्योंकि मार्केट में लोअर लो बनते ही जा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस था और मार्केट अगेन कंटिन्यूड इनटू द सेम डायरेक्शन। तो दिस लोअर हाइज जो स्विंग्स पॉइंट हैं, अगर वो भी एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो वो जो चीज़ है हमारी वन टाइम फ्रेमिंग है, और ये है हमारी जो हमारा रेंज एक्सटेंशन था। तो ये हम कहेंगे जब भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो दैट पार्ट was one time framing, and this is your range extension. I said it wrong earlier. So this is range extension because ये lower side में है, तो ये range extend करती जा रही है, और one time framing that means एक एक step आप नीचे उतरते जा रहे हो staircase से। Similarly यहाँ पे range extension ऊपर की तरफ हो रही है, रेंज रेक्स जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं, और वन टाइम फ्रेमिंग मतलब आप एक एक स्टेप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हो। तो एक अप ट्रेंड में आप ऊपर धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हो, और एक डाउन ट्रेंड में आप धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे हो। दैट मीन्स वन टाइम फ्रेमिंग हो रही है। तो रेंज एक्सटेंशन प्लस OTFing इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट, बी इट अपसाइड और बी इट डाउन साइड, राइट। चलिए, ये हमारा एक पॉइंट हुआ इस ट्रेंड को देखने का, और यू कैन से ट्रेड फैसिलिटेशन को देखने का, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि ऑप्शन की स्ट्रेंथ को मॉनिटर करने का, कि क्या ये अभी स्ट्रॉन्ग है या वीक हो गई है, राइट। उसके बाद हमारा अगला जो साइन आता है वो होता है VWAP। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था। इसका मतलब होता है जो आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है फॉर द डे। तो इसे डेली चार्ट पे ना लगा, क्योंकि ये डे के लिए होता है। इसे आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे भी लगा सकते हैं। यूजुअली पीपल 5 मिनट के चार्ट पे लगा करके इसे देखते हैं और अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंगली। आई जस्ट शो यू हाउ डज VWAP वर्क्स। लेट मी जस्ट शो यू अनदर चार्ट। आई पुल अप अ चार्ट एंड शो यू द मार्केट व्यू, how is it working. Let me just go to 5 minute, this, that, nice. So you may be able to see these days separately like this, and अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसमें एक बार सेशन ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि दिन कहाँ से शुरू है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो दिस इज़ द सेशन ब्रेक। लेट मी जस्ट पुट इट विद अ गुड कलर so that you can see the difference. Yeah, so every line that has separated the day is a different color, is the next day basically. So let me just see if you can see it now better. Okay. The lines would be now clear. Right. So ये हमारे दिन हैं जो सेपरेट हैं, और अगर हमें यहाँ पे VWAP लगाना है
तो वीवैप भी आपको इंडिकेटर्स में मिल जाएगा, आप जा सकते हैं इंडिकेटर्स में एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन वीवैप, VWAP। तो आपको एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है ये चीज़ ये मिल जाएगी, और आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, बट इसके आप कई सारे वेरिएशन देख रहे हैं जो कि हर एक दिन से शुरू तो हो रहा है, बट इसके साथ 3 और लाइन्स हैं, मतलब 2 और लाइन्स है जो उसका डेविएशन है बेसिकली। तो ये एक अच्छा एग्जांपल अभी डिस्कस करने के लिए आप देखना चाहें तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि जो मिड लाइन है, हम इस पर्टिकुलर डे की बात करते हैं जो आज हुआ है, जो ब्लू लाइन है दैट इज़ द वीवैप, और जो ये 2 ग्रीन लाइन है दीज आर द लाइन ऑफ इट्स डेविएशन, मे बी वन यू नो single deviation. So let me just take these band multiplier off. People can have as many bands as possible कि हमें डेविएशन देखना है कि 1 मल्टीप्लायर एंड 2 मल्टीप्लायर कहाँ जा रहा है ना, यू नो व्हेन यू प्ले एंड पुट दीज चार्ट्स यू कैन सी द थर्ड मल्टीप्लायर की जो कैंडल है वो हमेशा सपोर्ट की तरह काम कर रही है. पीपल कैन से दैट, राइट? लेट मी जस्ट टेक दिस कंफ्यूजन आउट एज वेल. People might come later on after putting these charts and put these fancy things and just tell you as I said earlier indicator की तरफ से कि हमारी जो मेन चीज़ है वो है ये वाली लाइन ब्लू कलर की, जो हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है. दैट मीन्स जिस कैंडल पे जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहा होगा, लेट मी जस्ट पुट वॉल्यूम एज वेल फॉर यू गाइस. सो बेसिकली हर एक कैंडल का वॉल्यूम तो सेम नहीं है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, है ना? हर एक कैंडल का वॉल्यूम अलग है. इफ़ यू सी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल का है, और उसके बाद सेकंड कैंडल का है, और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम डिके होता जा रहा है. थ्रू आउट द डे वो थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता. टूवर्ड्स अराउंड 12:31 थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, अराउंड 2:30 फिर इंक्रीज़ हुआ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बिल्कुल इंक्रीज़ हो गया. तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है टूवर्ड्स द एंड एंड टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द डे. तो उस प्राइस को ज़्यादा वेटेज देके उसका एवरेज निकालना, दैट इज़ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. तो हर एक कैंडल का जो एवरेज है उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा, उसे कम वैल्यू दी जाएगी अगर उसमें वॉल्यूम कम है, और जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है उसको वैल्यू ज़्यादा दी गई है. उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स ड्रॉ करके ये लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है? अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अगर इसमें मिनिमम 1 डेविएशन, वही स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने बात करी थी, रिमेंबर द बेल कर्व आइडिया, 70% इज़ इन द सेंटर एंड 30% है. यही डेविएशन का आइडिया में ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है आपके कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उससे कितना डेविएट हो सकती है. लेट्स से फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ जस्ट टिल हियर, and then second standard deviation goes a little bit more wider and third standard deviation goes even wider like that. तो आप इसको कितने भी डेविएशंस तक लेके जा सकते हैं, और आपको एक छोटा सा कोरिलेशन दिखाई देगा कि थर्ड जो वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ से मार्केट बाहर नहीं निकल पा रही है, वहीं से मार्केट बार बार सपोर्ट लेती ऊपर चली जाती है, ठीक है? ये थर्ड डेविएशन यहाँ पहुँचा, मार्केट ऊपर चली गई इस कैंडल पे. आई विल शो यू ऑल द कैंडल्स. इस कैंडल पे ऊपर गई, इस कैंडल पे ऊपर गई, यहाँ पे ऊपर गई, जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से भी उसने थोड़ा सा अप मूव दिया. इस कैंडल ने बाहर आनी कोशिश करी बट फिर ऊपर चली गई, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी एक अप मूव आ गया. तो जैसे जैसे ही नीचे जाएगा, जब जो मार्केट वहाँ पे पहुँच रही है, तो आपको हर बार यही दिखाई देगा कि जैसे ही वो टच करती है देयर इज़ अ पुल बैक अप. बट दैट्स वेयर इट इज़ प्रॉब्लम कि ये सब कुछ इज़ इन द हाइंडसाइट, यानी जब सब कुछ इफेक्ट में हो चुका है उसके बाद है. प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप यही सारा चार्ट अगर होगा आपका, जब लाइव मार्केट में चलेगा तो आपको ये चीज़ें समझ में ऐसे नहीं आएंगी. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ऑफ ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जब भी टच होगा गारंटी नहीं है कि ऊपर जाए, और आपको लॉस कर सकता है. तो बिकॉज यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन आ रही है, इस वजह से मार्केट ऊपर हो जाएगी, ऐसा नहीं है. मार्केट का प्राइस जहाँ जहाँ तक जा रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड इंक्रीज हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज आइडियाज़. जो ये एवरेज प्राइस है, जब मार्केट ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब जब वो डायरेक्शनल मूव दे रही है, तो ये बैंड एक्सपेंड हो गया है. बट ये जब डायरेक्शनल मूव नहीं था और मार्केट साइडवेज थी, तो ये बैंड छोटा था. यही बॉलिंजर बैंड्स का भी कॉन्सेप्ट होता है. तो इसीलिए ट्राई नॉट टू ट्रेड दीज बैंड्स एंड ऑल. इसीलिए मैं इसे फ़िलहाल अभी लगाया मैंने आपको दिखाने के लिए, बट मैं इसे हटा देता हूँ. इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि इसका लॉजिक नहीं है ज़्यादा मेरे पास. शायद किसी के पास हो, समडे यू विल गेट सम लॉजिक एंड देन यू कैन यूज़ इट. एब्सोल्युटली कीप योर माइंड ओपन फॉर दीज थिंग्स, ठीक है? तो आई जस्ट टेक दीज बैंड्स ऑफ एंड जस्ट इधर लिखा है यहाँ पे वेट फॉर द टाइम फ्रेम क्लोजेस, या जो कैंडल क्लोज होती है उसके बाद ये पर्टिकुलर चीज़ें यू नो एक्ट करती हैं. तो लेट मी जस्ट थिकन इट लिटिल बिट. ये हमारा एवरेज प्राइस है
और ये जो एवरेज प्राइस है आप इस पे देखेंगे कि इसका एक लॉजिक है, ये बिना लॉजिक के नहीं है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसका इसमें भी तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब ये एवरेज प्राइस है ये जब पहुँचेगा तब ऑलरेडी मार्केट उस जगह से रिजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये इन सब कैंडल्स पे तो एक्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये भी सेम चीज़ ही है ऑफकोर्स, पर इसका आपको एक छोटा सा ध्यान ये रखना है, इसे यूज़ करने का तरीका ये है कि जब मार्केट साइडवेज है तब ये एवरेज प्राइस, क्योंकि ये साइडवेज है, इमेजिन कोई चीज़ अगर साइडवेज है तो उसका एवरेज प्राइस जो होगा इस पूरी मूवमेंट का वो भी तो सेंटर में ही होगा, इसीलिए मार्केट के बीच में सेंटर में है, इसलिए कैंडल्स इसके ऊपर नीचे सब जगह जा रही हैं। बट द मोमेंट इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शनल मूव तो वो एवरेज प्राइस गिरेगा, क्योंकि अब वो एवरेज प्राइस अपने पॉइंट से नीचे जा रहा है तो वो इसलिए एवरेज भी गिरेगा उसका। तो जब वो एवरेज गिरता है, अब आज का दिन तो ट्रेंडिंग था इसलिए वो जाता ही रहा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। बट सम ऑफ द डे जो नॉर्मल डेज होंगे उसमें कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट जैसे ही स्टार्ट हुआ, इफ़ इट फेल गोज अप एंड देर इज़ अ एवरेज प्राइस दैट्स कमिंग हियर, market would give a reaction to it and then you can use those three quantum जो हमने यूज़ करे हैं, less time, more time, much time। अगर वो quantum में आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे less time लिया है तो you will get a rejection। अगर वो यहाँ से less time ना लेके चिपकने की कोशिश करे तो it would go up and change the whole day into a positive day। that can also happen। एंड अगर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो ये गिर भी जाएगा। सो एट एवरी रेफरेंस दीज थिंग्स कैन हैपन द सेम वे, बट ये एक थर्ड पॉइंट ऑफ एक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द एवरेज वेटेड प्राइस, कि उस दिन का एवरेज प्राइस से अगर मार्केट नीचे चल रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नेगेटिव ही रहेगी, और एनी पुल बैक दैट कम्स टू दैट वी वैप कैन बी सोल्ड प्रोवाइडेड दैट यू सी कि जैसे आपने सेल करा है यहाँ पे उसके बाद का एक्शन क्या हो रहा है। क्या उसके बाद का एक्शन कुछ इस तरीके से तो नहीं है कि वो यहाँ पे रुक ही गया है। आप यहाँ पे कोई और दूसरा रेफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैटिक रेफरेंस नहीं है, तो आप इसका कॉन्फ्लुएंस बना सकते हैं कैसे, कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये लोज हैं जहाँ से मार्केट ने पहली बार रेजिस्टेंस किया था और मार्केट अगर घूमते फिरते वापस इधर आए तो आपको दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा वी वैप और एक मिलेगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि पहले था सपोर्ट अब बन गया है रेजिस्टेंस, और मार्केट शायद से रिस्पेक्ट करे। अगर वो ऐसा होता तो वी कैन सी दीज एग्जांपल्स कहीं और भी। I'll just see if I can find out some example of VWAP trading on the 5-minute chart। Let me just show you। It would be visible on a trending day better, not on a sideways day। आप जैसे देख सकते हैं कि sideways day में वो बिल्कुल एकदम से जैसे सॉरी अगर आप देखेंगे तो साइडवेज डेज में ये कैंडल्स के बीच में ही रह जाती है, राइट। नॉट अ वेरी गुड आइडिया था, ठीक है। तो हम एक कोई ट्रेंडिंग डे देखते हैं जिसमें साइडवेज मूवमेंट ना हो, जैसे कि ये एक ट्रेंडिंग डे है टुवर्ड्स द डाउन साइड, ये भी एक ट्रेंडिंग डे है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वीवैप एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेट मी जस्ट शो यू दिस साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे क्योंकि ये एवरेज प्राइस आपका एक बार अब मार्क हो गया है, मार्केट स्टार्टेड इन द इनिशियल पार्ट, एवरेज प्राइस कैंडल्स के बीच में ही रह जाता है क्योंकि वहीं पे ए और बी सेक्शन जो इनिशियल वो है हमारा रेंज बनता है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कहाँ जाना है। वंस इट डिसाइडेड दैट इट्स वांट टू गो डाउन एंड देयर इज अ शार्प फॉल, उस फॉल के बाद जब कभी भी पुल बैक आया ऊपर की तरफ, दैट वुड वर्क एज अ रेजिस्टेंस। मार्केट शोड इट्स रिजल्ट अगेन रीच शोन इट्स रिजल्ट्स। सो यू नो दिस इज टेकिंग लाइक ट्वाइस आपको वीवैप का एक ट्रेड मिल रहा है कि वीवैप पे आके आप उधर वहाँ पे एक बार दोबारा सेल कर सकते हैं। सेम चीज़ विल बी वैलिड फॉर अ बाइंग एज वेल, बट आई एम सेइंग कि not a holy grail and should not be just trading it alone। I would still say कि अगर यहाँ पे कोई और स्विंग मुझे मिला होता, कोई और एक और रेफरेंस कुछ होता, तो I would be more stronger about this particular trade। So these are the another trade ideas जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम ट्रेड फैसिलिटेशन को देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डे में ट्रेड फैसिलिटेशन जो है वो अच्छा कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जाते हुए अगर कंटिन्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि रेंज एक्सटेंशन हो रहा है, ओटीएफिंग हो रहा है कि ऊपर कुछ रिवर्स नहीं मारा है पीछे से कैंडल्स ने, और जब उसने पूरा अपना काम कर लिया है तब जा कर के स्विंग्स पुल बैक लेते हैं और आप लोअर लो नहीं बना पाते, तब आप ऊपर की तरफ जाना कोशिश करते हो, और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पहली बार होता है कि इंटरनल ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस हाई गेट्स ब्रोकन इंटरनली। वाई एम आई सेइंग इंटरनली? बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड तो आपने नीचे की तरफ है, बट एक जो पुल बैक आया है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है,
फॉर अ बिगर पुल बैक टू कम डाउन बैक अगेन, डिपेंडिंग कि अगला दिन कहाँ खुलेगा. सो अगला दिन तो हमारा गैप अप ही खुला और बुलिश हुआ, तो इस वजह से ये पूरा आइडिया ऑफ दिस रेंज एक्सटेंशन टू गो डाउन डिड नॉट वर्क आउट. सो दैट्स वाई इट्स अ सेटअप फॉर इंट्राडे प्लेयर. इंट्राडे प्लेयर में यहाँ पे क्या हुआ है कि जब लोअर लो बनने बंद हो गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक हायर हाई जो था यहाँ पे जो हाई है उससे हाई हमने ऊपर बनाया, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद उससे पहला रेजिस्टेंस अपने वी वैप पे मिल रहा है, राइट. एंड देन यू कम बैक अगेन डाउन एंड डे फिनिशेज ऑलमोस्ट देयर ओनली. सो दिस इज अनदर सेट ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन आइडिया कि वी वैप भी आपका उसमें एक्ट कर रहा है कि अच्छा अगर आपका डाउन ट्रेंड है तो मैं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करूँगा, और अगर आप ट्रेंड है तो मैं एक सपोर्ट की तरह एक्ट करूँगा. ठीक है, चलिए अब इसके एक और एग्जांपल को देख लेते हैं. लेट्स जस्ट पुट इट दिस वन बिफोर वी गो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रेड आइडिया जो हमने लेकर के रखा है. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. हाँ, तो हम यहाँ पे थे और यहाँ पे जो नेक्स्ट आइडिया है वो है एग्जॉशन सिग्नल्स, वीक हाइज, वीक लोज, ओवरलैप, इनसाइड बार्स. तो ये भी हमने देखा है अपने इन चार्ट्स में. एक बार इन दोबारा से चार्ट्स पे जाकर के देखते हैं. लेट्स गो टू मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स. यस, अब इसमें इन्होंने बोला है वीक हाइज एंड वीक लोज. वीक हाइज एंड वीक लोज भी आपको ये बताते हैं कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है. जैसे कि इफ आई जस्ट unmerge this thing first, unmerge and show you the weak highs and weak lows. You can actually come here and just write down as well in the settings only. आप settings में भी अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे weak highs weak lows के लिए पुअर हाई पुअर लो जो है इन पे अगर आप टैप करेंगे तो अपने आप प्लेस करके भी दिखा देगा और आपको दिखाई देगा कि हम इन्हें वीक हाई या पुअर हाई क्यों कह रहे हैं और ये इनकी टेंडेंसी फिक्स होने की क्यों होती है. तो वी pinpointed this area as poor high. poor high मतलब कि आपने सिर्फ एक ही कैरेक्टर यहाँ पे बनाया, तो ये अगर दो कैरेक्टर होते या तीन कैरेक्टर होते तो ये टेल कहलाती, बट ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर है. तो सिंगल कैरेक्टर ऑन द टॉप, सिंगल कैरेक्टर ऑन द बॉटम, हियर दीज आर पुअर हाई. एंड पुअर हाई क्यों? क्योंकि पिछले कैरेक्टर को देख करके आपने यहाँ पे भी सेलिंग ली है. तो ये एक विजुअल रेफरेंस जो हमने पहले भी बात करी थी कि आप विजुअली एक रेफरेंस को देख रहे हो, तो वो ट्रेडर जो विजुअल रेफरेंस को देख करके यहाँ पे सेल कर रहे हैं, दोज हाइज, दोज सेलर्स, दोज सप्लाई इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, कैन बी टेकन आउट इन नियर फ्यूचर ओनली एंड देन वेरी नेक्स्ट डे ओनली इट वॉज टेकन आउट. यस, सिमिलरली यहाँ पे हमारा एक पुअर लो बनाया है इंट्राडे में कि के और एल पीरियड एक दूसरे से नीचे जा ही नहीं पाए, आपको बाइंग यहीं से मिल गई. ये सॉर्ट ऑफ दैट आइडिया है जहाँ पे डबल बॉटम बनने का आइडिया होता है. जैसे कि के नीचे तक आया और गया और फिर एल स्टार्टेड टू गो डाउन बट डिड नॉट गिव एनी रेंज एक्सटेंशन या नीचे की तरफ का लोअर लो नहीं बनाया और उतने ही लेवल से वो भी वापस हो गया. तो ये भी एक पुअर लो कहलाएगा. और अगर ये पुअर लो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स यहाँ से आपको फॉलो थ्रू मिले तो वो मिला, अगले दिन आप ऊपर गए, लेकिन देन इसकी भी टेंडेंसी होती है कि ये भी फिक्स हो जाएगा नियर फ्यूचर में, विच इज़ अबाउट टू बी द आइडिया ऑफ दिस प्राइस एक्शन जो कि अब यहाँ पे ऐसे आ रहा है, राइट. And while this is happening, all these poor lows and poor highs are getting fixed always. ये हमेशा फिक्स मतलब ये एक बार टेस्ट होने ज़रूर आते हैं कि अगर मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई है ऊपर जाते जाते और पुअर हाइज हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग हाई क्या होता है वो ये होगा जहाँ पे टेल है. टेल इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन. काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, वहाँ पे आप दोबारा से बहुत जल्दी आ नहीं पा रहे और उस एरिया में आके आप ट्रेड नहीं कर पा रहे. अब ये पूरी जो टेल है यहाँ से स्टार्ट होती है और इस एरिया में मार्केट अभी सिर्फ उसने ऐसे 2 दिन दिए हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा उसके बारे में लगा कि दिस टेल कैन बी नाउ फिक्स्ड, बट वो अभी भी फिक्स नहीं हुई है, वो सिर्फ टच करके उसे निकल गया है, राइट. तो वी कैन स्टिल सी दिस एरिया टू गेट टैप्ड अगेन टू फाइंड आउट व्हाट इज हियर एट दिस पॉइंट. इफ यू सी, राइट. तो दैट इज़ वन एरिया टू गेट टैप्ड. उसके अलावा जितने भी ये पुअर हाइज हैं वो टैप हो चुके हैं. ये पुअर हाइज है, ये पुअर हाइज है. जिस भी टाइम में मार्केट ने इन हाइज ने मार्केट को नीचे भेजा है, उन्होंने वापस आके ऊपर इन्हें देखा है कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं थी, हम इनसे ऊपर जा चुके हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं. ये भी पुअर सेलिंग थी, इससे ऊपर मार्केट जा चुकी है. ये सॉर्ट ऑफ एक्शन अच्छा था. ये जो एक्शन है कि मार्केट ने 3 कैरेक्टर्स दिए हैं
ऊपर जा करके और तब रिजेक्शन दिया, दिस इज़ अ रिजेक्शन, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग यू कैन से हाई विच इज़ लाइक कि अच्छा हाँ मार्केट को यहाँ पे कोई अपना बिजनेस नहीं मिला और वो नीचे जा रही है. This was a strong rejection. Of course, you can see it as well. This big tail. This is a strong rejection. But these were not strong rejection or from the top or the bottom. Single prints or maybe left side or right side के equal prints अगर हो तो equal prints, similar prints. These are not strong points for a buying to come. राइट. तो इसी तरह से ये पुअर लो और ये पुअर लो जिस टाइम पे मार्केट ने इन्हें ऊपर भेजा है और ये पुअर लो की जो लाइन बनी है यहाँ पे आके मार्केट इन्हें टेस्ट कर सकती है, इनसे नीचे जा सकती है और जितने भी पुअर लो हैं उनको टेस्ट कर सकती है और उसे टेस्ट करते करते वो इतना नीचे गिर जाए शायद वो नीचे की तरफ कंटिन्यू अपना जर्नी लेके चली जाए, बिकॉज दैट्स द बिगर ट्रेंड. डाउन, दिस पुल बैक, कंटिन्यूएशन डाउन, राइट. बिकॉज अब हमें क्योंकि रिजेक्शन भी मिल गया है और कंटिन्यूएशन ऑफ रेंज एक्सटेंशन विद नाइस स्ट्रक्चर भी मिलता जा रहा है. सिर्फ एक छोटा सा वो है कि हम स्लो ज़रूर पड़ गए हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट. सो इसीलिए सिर्फ कल के ओपन को देखना होगा कि कल का ओपन वापस अब इस एरिया के अंदर नहीं आना चाहिए. ये जो हाई है इनसे ऊपर नहीं जाना चाहिए. अगर मार्केट इनसे ऊपर जाने की कोशिश करती है, नॉट अ वेरी गुड आइडिया को, तो फिर इस पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करे शायद और इस जर्नी को करने से कंटिन्यू करने से पहले ऊपर की लिक्विडिटी को लेते हुए तब जाके नीचे गिरे, राइट. सो फॉर दिस होल थिंग टू हैव अ रिजेक्शन इज वेल डन, टू टैप इनटू दिस एरिया जो छोटा मोटा हो गया थोड़ा बहुत और नीचे के इनको टारगेट करने की वजह से और पूरे ट्रेंड को कंटिन्यू करने की वजह से मार्केट कैन गो डाउन, and that is the expected behavior. And if that does not happen that way with a gap down or something and market taps into this area, tap here to this HVN and try to goes up, then it would try to actually go and fill these points as well कि क्या ये sellers strong थे या नहीं थे. With the same logic of market goes up to find sellers and sellers will be found at these point and market goes down to find buyers and buyers will be found at these points, right. So these are the poor lows and poor highs for you and let's see the next यानी ये हमें बताते हैं कि अच्छा मार्केट का जो ट्रेंड है वो शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर वो इनके ऊपर बेस है. तो इमेजिन अ ट्रेंड विच इज़ गोइंग अप, तो अगर कोई ट्रेंड ऊपर जा रहा है जैसे कि यही ट्रेंड है जो ऊपर जा रहा था अभी तक, बट अगर वो अपने पीछे पुअर लो छोड़ करके जा रहा है तो आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं रहने वाला है. बट ये जो ट्रेंड था जो नीचे आ रहा है ये अपने पीछे टेल्स छोड़ के जा रहा है और जो टेल्स छोड़ के जा रहा है तो आपको पता चलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है. तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रिवर्स ज़रूर कर सकती है पर उसे उस टेल के अंदर आके पूरे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से रिजेक्ट हो जाना चाहिए जो कि रिजेक्शन यहाँ पे दिखाया भी गया है. 2 पीरियड्स का ही सही पर रिजेक्शन देके मार्केट को वापस नीचे धकेल दिया गया. तो अगर मार्केट दोबारा से इधर आती है देन इट्स नॉट गुड फॉर दीज सेलर्स एंड देन it would go up higher after of course taking these liquidity. ठीक है. सो मार्केट का अगर बेस वीक हो तो ट्रेंड जो है जो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है अगर पीछे लोअर पुअर लोज हैं तो वो फिल होने के लिए मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है. इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. और सिमिलरली अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन अगर उसके जो ऊपर के हाइज हैं वो वीक्स हैं तो मार्केट अपनी लिक्विडिटी को ऊपर लेने के लिए फिर ऊपर जा सकता है. चलिए ये हुए हमारे पुअर लोज एंड पुअर हाइज एंड नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा क्या है? POC माइग्रेशन एंड एनोमली फॉर्मेशन. नाउ POC माइग्रेशन और एनोमली फॉर्मेशन क्या है? POC माइग्रेशन तो हमने जो डिस्कस करा था कि जब भी हमारा मार्केट किसी ट्रेंड में होगा तो जो हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल होते हैं वो माइग्रेट करते चले जाते हैं. दैट मीन्स दे शिफ्ट इनटू वन डायरेक्शन. अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको पहले इधर से दिखाता हूँ. जब आप देखते हैं कि एक ट्रेंड एक हेल्दी ट्रेंड है तो जो हेल्दी ट्रेंड होता है उसका पॉइंट ऑफ माइग्रेशन धीरे धीरे शिफ्ट होता है ऊपर या नीचे की तरफ. लेट मी शो यू हाउ. हमें पता है कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट चल रही है काफ़ी टाइम से. ये मार्केट साइडवेज ही है एंड इट डिड नॉट गिव मच ऑफ द फॉलो थ्रू. तो आपको दिखाई देगा कि जो पुल बैक था दैट वाज अ बेटर ट्रेंड. वाई? बिकॉज जो POC है जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो कंटिन्यूसली आराम से विदाउट मेकिंग एनी प्रॉब्लम वाज गोइंग डाउन. सो दिस वाज अ गुड मूवमेंट
to go down, but because it was leaving some sort of poor highs, only because of this reason. And another reason is definitely because it's a longer time frame up move and there is a pullback and then there is a good rejection tail. तो अगर आप देखेंगे कि जो ऊपर के सेलर्स हैं उनके पास ऐसा कोई क्लीन एरिया का रिजेक्शन टेल नहीं है, ये एरिया फिर भी इसके अंदर है, तो ये टेल की तरह इतना कंसिडर नहीं करा जाएगा जितना ये करा जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो टेल्स हैं नीचे ज़्यादा बन रही हैं, हम बार बार उन टेल्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन जब कोई एक्सट्रीम टेल बनती है वो एक्सेस कहलाती है और वो ऊपर जाने की फिर कोशिश करे और उस एरिया में आप दोबारा ना आए एक बार, लेकिन आपको वापस ऊपर फेंक दिया गया, दैट गिव्स द ओरिजिनेशन टू ट्रेंड बैक अगेन। इसमें जो POC था, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, नीचे शिफ्ट होते होते अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ज़्यादा था, बट उसके बाद जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे डाई आउट हो गया। तो जब पॉइंट ऑफ कंट्रोल धीरे धीरे डाई आउट होता चला जाता है तो आपको पता चलता है कि वो जो कंटिन्यूशन है वो अब एंडिंग पे आ रहा है, प्लस द कॉन्टेक्स्ट कि आपको एक टेल मिल चुकी है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो चुकी है कि अपना एक ही जो दिन था ये पूरा दिन, उसके अंदर आप जो एक्सटेंशन है बना नहीं पा रहे हैं, लोअर एक्सटेंशंस, और ओवरलैपिंग कैंडल्स बना रहे हैं, 2 दिन आप इसी कैंडल के अंदर ही रहे। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ कि अब आप वापस कंटिन्यू ऊपर कर सकते हो। दैट इज़ द POC शिफ्ट फॉर यू, कि POC शिफ्ट जैसे ही धीरे धीरे साइडवेज होना शुरू हो जाए तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर द ट्रेंड। अगर आप वो चीज़ यहाँ भी देखना चाहें तो आपको यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाई देगी। जब हम यहाँ से दोनों ही एरिया में आपको देखना होगा कि ये एक ट्रेंडिंग मूव था, इम्बैलेंस था ये मार्केट का, जिसमें मार्केट ने बहुत सारी एनोमलीज बनाई। एनोमलीज इज दिस एरिया, जो एरिया फिल नहीं हुआ है वॉल्यूम से, और हमने बात की थी कि जो वॉल्यूम से एरिया फिल नहीं होते मार्केट उसे फिल करने दोबारा वापस ऊपर आ सकती है। तो बिना फिल करे इस एरिया को जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है अगले अगले दिनों के, वो इतने ज़्यादा ओवरलैपिंग है, तो रेंज एक्सटेंशन हो ही नहीं रही है, राइट। और जब रेंज एक्सटेंशन नहीं हो रही है तो मार्केट माइट जस्ट ट्राई टू गो डाउन बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, एंड एग्जॉशन करते हुए इट कम्स एंड फिल दीज एनोमलीज टिल हियर, we leave them, we actually left them in between, given a tail and try to come up back again। and अगर यहाँ पे भी आप अपना POC वो देखें तो क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है शॉर्टर फ्रेम का, तो इसमें भी POC ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होनी चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। पॉइंट ऑफ कंट्रोल बहुत ही धीरे शिफ्ट हुए बट ओवरलैप होने शुरू हो गए। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, सो इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी अप ट्रेंड, and when it's not a healthy uptrend then less continuity idea and more of the downside idea originates। So this is another sign that you can see for continuity or some weakness, to spot some weakness in a trend, कि जो point of control है वो healthy way में shift नहीं हो रहा है और थोड़ा overlap कर रहा है, right। Let's just quickly go to the next point। तो हमने देखा कि मार्केट में एनोमलीज होती हैं, मार्केट में पॉइंट ऑफ कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए, और अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ एबनॉर्मल वॉल्यूम्स। ना एबनॉर्मल वॉल्यूम्स कम्स व्हेन, जब भी आपके पास होगा कोई डिस्कवरी डे। ना डिस्कवरी डे का क्या होता है, जो कि इम्बैलेंस डेज होते हैं, जैसे कि ये डे है हमारे पास, ये एक डिस्कवरी डे है। इस दिन का जो वॉल्यूम होगा वो भी एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल वॉल्यूम कैन बी टू, ऑफ कोर्स वन इज़ हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम जो आप ये देख रहे हैं, और इनको हमने बोला है एनॉमलिटी यानी एनॉमली, और दूसरा एबनॉर्मल वॉल्यूम है जो कि एक वर्टिकल वॉल्यूम दिखाई दे। जो साइन वर्टिकल वॉल्यूम का एबनॉर्मल वॉल्यूम हमें दिखाई दिया था, आई जस्ट लाइक टू शो यू वंस अगेन, दैट एबनॉर्मल वॉल्यूम केम ऑन दिस डे, and combining it with the idea of its let me just put the volume here to you। Yes, on balance volume, yes, so this is the volume, and if you see this volume, let's change it to लाइन से बार्स में, एंड इवन कलरफुल बार्स बना दें ताकि वो थोड़ा और हिस्टोग्राम, स्कैटर, ट्रायंगुलर, नहीं, हिस्टोग्राम वुड बी बेटर। आई डोंट वांट द लास्ट
राइट, ठीक है, इसी के थ्रू देखते हैं। इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि 30 मिनट्स का चार्ट है, अगर आप इस पर्टिकुलर डे को वॉल्यूम में डेली पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जो वॉल्यूम था यहाँ पे वो एबनॉर्मल था। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से एबनॉर्मल वॉल्यूम? आई मीन टू से दिस, लेट मी जस्ट शो यू, द चार्ट इज हियर, यस। सो ऑन दिस डे हमें एक एबनॉर्मल वॉल्यूम दिखाई देता है जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे। Let me just show you this day, and that happened on a daily chart. So 5 minutes say, let's go to daily chart, and you can see some of the volume spikes in between, and we've spoken about it and taken this case history earlier as well. आपको दिखाई देगा कि जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस डेज के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा था। वो एबनॉर्मल वॉल्यूम कहाँ कहाँ पे हम स्पॉट कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। वो एबनॉर्मल वॉल्यूम है हमारा ये पॉइंट, प्रोवाइडेड विद द कैंडल एज वेल। अगर आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम जो है बाकी प्रीवियस कई सारे दिनों से ऊपर है, नेक्स्ट वॉल्यूम इज़ इवन मोर अप, और जो ये अप है उसमें प्राइस का मूवमेंट कुछ नहीं था। सो दैट वाज द एबनॉर्मल वॉल्यूम, प्रोवाइडेड कि ये सारी जितनी कैंडल्स थी आपको दिखेगा इनका साइज विद रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम was big, but this one has bigger volume with respect to its size relative to the other candles around it. So that was the abnormality that we get to see sometimes, and that also tells us about certain sort of action that can happen in the market. We have already spoken about it, so I don't want to extend that part again, but these are certain early signs that you can see in the markets to spot the trade facilitation on a shorter time frame, right? Now similarly we're gonna have these bigger time frames as well, the same thing, but on bigger time frame it would be on dailies. So in dailies में क्या होता है, dailies में आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं, बट इनके अलावा क्योंकि आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो डेली से चेंज हो जाता है, तो उसमें आप वैल्यू एरिया डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादा फोकस देते हैं कि क्या हमारी वैल्यू शिफ्ट ऊपर हो रही है या नहीं हो रही। दैट मीन्स कि जो हमारे प्रोफाइल चार्ट्स हैं क्या वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। अगर वो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, क्राउडेड है, दैट मीन्स देयर इज़ सो मच एग्जॉशन हैपनिंग। बट अगर वो वन टाइमिंग फ्रेमिंग की तरह ऊपर जाते जा रहे हैं, लाइक यू नो एक हेल्दी वे में, इफ़ दे आर जस्ट गोइंग अप, taking their own path once here and there but goes up back again, then this is still a healthy way to go up. So that what we have to see कि value area जो है हमारा डायरेक्शनल में हो, साइडवेज तो ना हो। अगर साइडवेज है तो ट्रेड फैसिलिटेशन इतना अच्छा नहीं है। वो जगह है जहाँ पे आपको शायद अक्यूमुलेट करना चाहिए था अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, और डायरेक्शनल मूव में आपको फिर उस राइड को एंजॉय करना चाहिए। एंड देन OTFing एंड रेंज एक्सटेंशन, वही जो हमने बात करी थी कि अगर वन टाइम फ्रेमिंग हो रही है तो हर बार रेंज एक्सटेंशन होती चली जाए, और वन टाइम फ्रेमिंग भी मतलब एक एक स्टेप आप ऊपर स्टेयरकेस पे ऊपर चलते चले जाएँ, राइट। एग्जॉशन सिग्नल्स आर दी सेम, वीक हाइज वीक लोज, बट ऑन द डेली चार्ट कि कहीं पे कोई डेली कैंडल तो नहीं है जो इक्वल हाइज करने के बाद कोई रिएक्शन दे रही हो, दैट कैन बी स्टिल अ वीक साइन, यू नो लाइक दैट। देन PPOC यानी प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अगर प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल किसी ट्रेंड के बीच में आने शुरू हो जाए, दैट मीन्स हमें प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल कब मिलता है, जब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लॉन्ग हो जाता है। ये हमने डेज टाइप में देखा था, तो हमें दिखाई देता है कि रेंज ऑफ द डे वॉज वेरी लो। अब एक अप ट्रेंड में जाते जाते अगर कोई दिन बिल्कुल नैरो हो जाए तो दैट मीन्स इट इज़ एक्टिंग अप लाइक अ डोजी, जो आगे या ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा पाया और एक बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ, एक बहुत छोटे एक्सटेंशन के साथ यहीं पर रुक गया। दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर अ ट्रेंड। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट PPOC। अगर आपको दिखने शुरू हो जाए, प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिखने शुरू हो जाए, तो देर आर चांसेस कि उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो इट वुड लेटर ऑन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड देन इट वुड गो डाउन। यस, ओवरलैप, वी स्पोकन अबाउट ओवरलैप, जो हमारा रेंज एक्सटेंशन होता जा रहा है प्रोफाइल चार्ट के साथ, उसमें ओवरलैप आना शुरू हो जाए, दैट इज़ अ वीकनेस साइन। abnormal volume is the same thing that we spoken about, it's a vertical volume, कि अगर आपका वॉल्यूम एवरेज है लेकिन आपका प्रोफाइल बहुत एक्सटेंडेड है, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया।
अगर आपका प्रोफाइल बहुत छोटा है और आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, that is also not a good idea. So if these abnormal values happens in the volume related to the candles, then those things can be a sign of a weak push in terms of अगर ये push हो गया है but volume के साथ push नहीं हुआ, volume कम ही था, then these things are just ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के जाएगा जिसमें बहुत सारी अनोमलीज होंगी और मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो बहुत जल्दी नीचे गिरते हुए इन एनोमलीज को फिक्स करते करते नीचे आ जाएगा, राइट? दैट इज फॉर द हायर टाइम फ्रेम. Now reaction at prior preferences. These are the prior preferences when I say, I mean to say those ups and downs which is the resistance and the support. इन resistance या support पहुँच के reaction कैसे आ रहे हैं? जो हमने 5 points की बात करी थी, क्या वो quickly reject करें, क्या उन्होंने time लिया, क्या उन्होंने ज़्यादा time लिया, और क्या वो through चले गए, those things. Then EOD profile shape. एंड ऑफ द डे के प्रोफाइल शेप बहुत मैटर करते हैं एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए, क्योंकि अगर आपका जैसे हमने एक बार कभी बात करी थी पी और बी शेप की, कि पी और बी शेप कहाँ पे आ रही है. जैसे कि अगर हम बात करें करंटली जो हमने अभी रिसेंट मूवमेंट देखा है, तो हमें एक बी शेप स्ट्रक्चर दिखाई दिया है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चार्ट्स में, मार्केट प्रोफाइल के चार्ट्स में, जब हम यहाँ पे एक गिरते हुए ट्रेंड में हैं. Let me just take this off first. जब हम यहाँ पे गिरते हुए ट्रेंड में हैं, तो हमें दिखाई दिया कि एक टेल के बाद थोड़ा वॉल्यूम टुवर्ड्स द लो अटैच हुआ है, बट ये हुआ है अटैच एक गिरती हुई मार्केट में. और हमने बात करा था कि अगर बी शेप गिरती हुई मार्केट में आ रही है तो वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है. उसकी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट माइट जस्ट गो पुल बैक एंड फॉल अगेन, एंड दैट इज सिमिलर थिंग दैट इज हैपनिंग हियर, दैट मार्केट गो इनटू अ पुल बैक एंड देन कंटिन्यू इट्स जर्नी बैक अगेन. बट अगर यही बी शेप किसी अप ट्रेंड में हो जाता, जैसे कि अगर ये अप ट्रेंड जा रहा था, कि मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए अप ट्रेंड जा रहा था और इस अप ट्रेंड के किसी एक पॉइंट पे गैप अप होकर मार्केट एकदम बहुत ऊपर जाती और सडनली वहाँ पे से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ अपनी सारी वैल्यू अटैच करती, दैट होल थिंग कुड हैव बीन टॉक्ड. ऑफकोर्स रिजेक्शन तो ये भी है, बट ये जो रिजेक्शन होता है ये ट्रेंड चेंजिंग रिजेक्शन होता है, ये फिर प्रॉफिट बुकिंग ना कहलाती. तो वेयर इट ओपन्स अप, वेयर इट गेट्स मेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर ये बी शेप किसी अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है, दैट इज़ अ रिवर्सल साइन. सिमिलरली अगर किसी डाउन ट्रेंड पर पी शेप बनता है, तो मार्केट हैज़ रिजेक्टेड फ्रॉम दोज एरियाज एंड देन वी कैन सी दैट थिंग समथिंग हैपनिंग लाइक दिस हियर, राइट, एंड मार्केट रिवर्स्ड एट अ डाउन ट्रेंड के बॉटम पर. So P shape and B shapes are also important. These are the shape of the end of the day. कि end of the day की shape कैसे आई है. And usually you should see these shapes by splitting the profile rather than like keeping the profile. Otherwise आपको P shape और B shape और D shape में फ़र्क नहीं पता चलेगा, right? That is important कि जो move आया है ये starting of the day में आया है या towards the end of the day में आया है. यहाँ पे तो हमें कैरेक्टर दिख रहा है तो हमें पता है ये starting of the day में है, बट यूजुअली अगर कैरेक्टर ना दिखाई दे तो आपको स्प्लिट कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये बी शेप था, ये मार्केट पूरे दिन यहाँ पे पहले कंसोलिडेट कर गई और ये फिर डी शेप था, राइट? क्योंकि जब ये स्प्लिट नहीं होगा और ये कंप्रेस्ड होगा तो ये शेप बी ही दिखाई देगा, तो आपको हमेशा से स्प्लिट करके देखना चाहिए. गुड. जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि येस ये पी शेप है, एंड आई टेल यू द कॉन्टेक्स्ट एज वेल अगेन, इट ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट. एंड यू विल से जैसे मैं इसे स्प्लिट करूँगा कि ये तो पी शेप नहीं है, but let me just show you first. Without splitting it looks like P shape. Now with splitting it might not look like P shape to you, and let's just go to that point. Let's split it. अब ये आपको दिखाई देगा कि ये P shape तो नहीं है, ये तो certain sort of Q shape लग रहा है, right? But Q shape also has the similar idea कि market has extended too much and might just try to go up again, कि value यहाँ पे थी और ये इधर रह गया, right? So that is the idea that you can see from here as well. बट अगर ये P शेप भी होता तो भी इसका सेम प्रोफाइल मतलब सेम ना होता, तब हमें A कैरेक्टर इस साइड मिलते और हमें वॉल्यूम ऊपर मिलता, तो भी इसका रिजल्ट सेम ही आता कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. बट हाँ, अगर ये A कैरेक्टर होते और मार्केट का वॉल्यूम बाद में अटैच होता तो वो मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता एज अ रिजेक्शन रादर देन Q. दो Q ऑल्सो शोज अ टेल, बट
after volume has been attached and then it fell, and then the next day opens up and make the volume up here and then continues and did not enter into the tail area. These things इनका वेट करने के बाद हमें पता चला कि अच्छा ये इफेक्टिव है और ये रिवर्सल है. बट अगर ये स्टार्टिंग ऑफ द डे में ही ए शेप बने और सीधा रिजेक्ट होकर के ऊपर चला जाए और तब अपना पूरा दिन ऊपर स्पेंड करे और नीचे आने के सारे एफर्ट्स बार बार जब भी करेंगे और फेल हुए हों, देन इट्स वेरी प्रोमिनेंट दैट द नेक्स्ट डेज आर गोइंग अप. जबकि यहाँ पे 2 या 3 दिन बाद के एफर्ट के बाद पता चला अच्छा हम ऊपर जा रहे हैं. राइट, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ splitting the profile and getting to know whether it's a P shape or it's a Q shape. चलिए, ये हुआ आपके लिए profiles shape. Now what is the next point? Let's just go to the next point as well to talk about it. The next point is that keeping market यही सारे points हैं. Now keeping market development at market profile chart and remember the core concepts. Now core concepts हमारे वही सारे points जो हमने देखे कि market auction market theory क्या कहती है कि market goes up to find buyers and goes up to find sellers and goes down to find buyers. And the idea of spending too much time or less time or more time, and the ideas of expected and unexpected behavior, the ideas of balance and imbalance, the ideas of inventory accumulation at one point and then ranging, pricing marks up high and then goes into some sort of ranging at the top, that is becoming distribution. Those ideas, when you see market with those lenses, then आपको सारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंटली दिखाई देना शुरू हो जाता है, बजाय कि आप हमेशा प्राइस के गिरने और उठने को मार्केट का गिरना या उठना समझिए. तब आपको दिखाई देगा कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में काम करती है और वो स्ट्रक्चर इसी तरह से काम करेगा. राइट, ठीक है. चलिए, विद दैट नोट आई फिनिश द क्लास and now next class we'll try to see how do we make some sort of trade setups. That's one idea. And next class we'll see some of the trade entries and trade setups through market profile charts की trade preparation क्या होनी चाहिए, एक process क्या होना चाहिए इसका. ठीक है, इसके बाद जा कर के हम ये भी देखेंगे कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं और इन्वेंट्री एक्चुअली शिफ्ट कैसे होती है order flow charts पे. Cool. चलिए, with that note I'll finish the class. You guys take care. Good night. And please come up with the questions. I have made a group now on the WhatsApp. I would have made it earlier, but now I've made a group on the WhatsApp. You guys can share your charts over there. You guys can share your questions over there. And if you have something to ask me in that group, and I'll answer you back. I'll share all the links as well of this whole classes over there, so that you don't have to go into your conversation history at the back. You can come here only. ठीक है. चलो, with that note I'll finish this class. Start sharing your markings on the charts and your views of particular asset class, whatever you are interested or invested in. It can be a stock or it can be any index, or it can be anything that you want to have some structure to be discussed with me or with other people, right? So share your views, and with that sharing only, other people can also learn through your good finding, good learning, or maybe even mistakes. Yeah, when one question comes to the group, it answers so many other people as well. Chaliye, with that note, let's finish the class. Take care guys. Good night. I'll catch you later. Bye.